السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے بزنس فائنانس کے 33rd لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا ہمارا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے، اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو ریوائز کر لیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی بات شروع کی رسک کی اور ریٹرن کی. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہائر دی رسک ہائر دی ریٹرن، لوور دی رسک لوور دی ریٹرن، کہ اگر آپ زیادہ ارن کرنا چاہتے ہو تو آپ کو زیادہ رسک لینا پڑتا ہے، اگر آپ ایک سیف انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے اوپر ریٹرن جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. اسی پرسپیکٹو میں جب ہم رسک اور ریٹرن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے رسک اور دو طرح کے ریٹرن ہیں. ایک تو ریٹرن وہ ہے کہ ہم نے ایک انویسٹمنٹ کر دی فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، 4-5 سال کے لیے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آن ایوریج ہم نے اس انویسٹمنٹ سے اس ٹائم پیریڈ کے دوران کیا ارن کیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکچوئل ریٹرن. یہ ہمارا جو ایکچوئل ریٹرن ہے دیٹ از بیسڈ آن دی ہسٹوریکل ڈیٹا، کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے ہم اس کو ایوریج آؤٹ کر کے وی ٹاک اباؤٹ دی ایوریج ایکچوئل ریٹرن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رسک کا فیکٹر بھی اٹیچ ہوتا ہے. ہم اس رسک کو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ اگین اس ایوریج ریٹرن کو فوکس بنا کے، سینٹر بنا کے وی ٹاک اباؤٹ دی ویریشن ان دا ریٹرن، کہ اس سے جو ہے کتنی دفعہ جو ہے ہمارا ریٹرن ایوریج سے زیادہ ہوا اور کتنی دفعہ ہمارا ریٹرن جو ہے وہ ایوریج سے کم ہوا. ریفرنس پوائنٹ ہمارا وہ ایوریج ریٹرن ہوتا ہے. ایوریج ریٹرن بائی دا وے از ناٹ دی ریٹرن جو کہ ہم نے ارن کیا ان اینی نمبر آف ایئرس. اٹ بیسیکلی از کہ جتنے ہمارے ایکچوئل ریٹرنز ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈ اپ کرنے کے بعد ایوریج آؤٹ کر دیتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں بائی دی نمبر آف ایئرس فار وچ وی ہیو دی ڈیٹا سیٹ. جب اس رسک کی بات کرتے ہیں تو رسک کو ہم میئر کس طرح کرتے ہیں؟ رسک کو میئر کرنے کے لیے we take help from a statistical measure جس کو ہم کہتے ہیں ویریئنس یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اب ویریئنس کیا ہے کہ ایوریج یا سینٹر پوائنٹ سے نیگیٹو پازیٹیو ڈیویشن کیلکولیٹ کرتے ہیں، زیادہ یا کم ریٹرن، پھر ہم اس کو اسکوئر کرتے ہیں ڈیویشن کو اینڈ دین وی ٹیک دی ایوریج ڈیویشن. اور جب اس کی ہم اسکوئر روٹ لے لیتے ہیں تو دیٹ بیسیکلی بیکمز دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. آپ کی جو ویریئنس ہے وہ آپ کو اسکوئرڈ ویریئنس بتاتا ہے، جبکہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ آپ کو سمپل پرسنٹیج میں آپ کی ویریشن جو ہے وہ بتاتا ہے. موسٹ کامنلی یوزڈ میئر آف رسک جو ہے دیٹ بیسیکلی از دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے ان کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایگزامپلس لی. آج کا لیکچر ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے with the variation in return کے ٹاپک سے یا variability in return کے ٹاپک سے، اور ایک comprehensive example لیں گے اور دیکھیں گے کس طرح ہم پہلے ایوریج ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کی اسکوئر ڈیویشن لے کے ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کرتے ہیں. دین ویل ٹاک اباؤٹ کہ ڈیسیژن میکنگ ہماری کیسی ہوگی، کہ اگر ہمارے پاس 2-3 الٹرنیٹیوز ہیں، ان کے ہمارے پاس ریٹرن بھی موجود ہیں اور رسک بھی موجود ہیں. اب اگر ہم نے چوائس کرنی ہو یا ہم نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہو، سلیکٹ کرنا ہو، تو ہم کس طرح جو ہے وہ کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایکسپیکٹڈ ریٹرن کے بارے میں، جو کہ ہمیں ہسٹوریکل ڈیٹا کے ساتھ تو ایکچوئل ریٹرن ہے جو کہ ارن کیا اس انویسٹمنٹ میں، لیکن جب ہم نے آج ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں فیوچر میں اس انویسٹمنٹ کے ایکسپیکٹڈ ریٹرن کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک ڈیسیژن میکنگ میں ہماری ہیلپ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم ریٹرن کی بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ریٹرن الون جو ہے دیٹ کین ناٹ ہیلپ اس آؤٹ ٹو میک اے گڈ ڈیسیژن. تو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے ایکسپیکٹڈ رسک کا، تو ہم اس کو بھی کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے اور دیکھیں گے کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. اینڈ فائنلی ویل ٹاک اباؤٹ دی کانسیپٹ آف دی پورٹ فولیو، کہ پورٹ فولیو میں ہم نے ایک انویسٹمنٹ نہیں کرنی. پہلے تو ہم رسک اور ریٹرن آف ون پرٹیکولر انویسٹمنٹ کی بات کریں گے، اینڈ دین پورٹ فولیو کے اندر ہم
combination of the investment جو کہ بانڈس میں بھی ہو سکتی ہیں اور اسٹاکس میں بھی ہو سکتی ہیں, ان کے بارے میں ذکر کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں with the continuation of the variability of the return, جو ہم نے کہا تھا can be measured with the help of the variance or the standard deviation. تو اس میں ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. What is the data for the example? کہ suppose we have two companies, companies X and company Y. ہم نے چوز کرنا ہے کہ X میں انویسٹ کریں یا Y میں انویسٹ کریں. تو جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے that is given in this particular table. یہ 2000 میں کمپنی X کا ریٹرن جو ہے that is 0.20, negative 0.20, which means کہ لاس ہے. کمپنی Y کا ریٹرن is 0.05 اور 5%. 2001 میں کمپنی X کا is 50% and کمپنی کا ریٹرن is 9%. 2002 میں کمپنی X کا ریٹرن is 30% and کمپنی Y کا لاس is 12% نیگیٹو ریٹرن. 2003 میں 10% for company X and 20% for company Y. What are the average returns? We have to calculate. Then based on the average return, we have to look at the variability of the return and we have to calculate the variances, standard deviations, and then finally we have to decide which investment is more volatile. So based on the previous ہمارا جو فارمولا ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن از اے میجر آف رسک, اور اس سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ویریئنس. تو ویریئنس کے لیے ہم نے کہا تھا ویریئنس آف آر از اکول ٹو R1 minus R bar square plus R2 minus R bar square and going up to T number of years ہم نے کہا تھا RT minus R bar square and that was divided by T minus 1. تو ایوریج ریٹرن میں ہم نے کیا کیا فار کمپنی X, ایوریج ریٹرن از RX is equal to minus 0.20 plus 0.50 plus 0.30 plus 0.10, یعنی ان کے ریٹرن فار آل دی 4 years starting from 2000 going up to 2004 divided by the number of years which is 4 is equal to 0.175. 17.5% as the average return for company X. Similarly, ہم company Y کا بھی calculate کریں کہ average return. So, RY is equal to 0.05 plus 0.09 minus 0.12 plus 0.20 divided by 4 is equal to 0.055 or 5.5%. تو یہ تو ہو گیا ہمارے average return for company X and company Y. Company X کا return is 17.5% and company Y کا is 5.5%. تو ریٹرن جو ہے وہ کمپنی ایکس کا زیادہ ہے اور وائی کا کم ہے. بٹ بفور میکنگ اینی ڈیسیشن وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی ویریئنسز. تو ویریئنس کے لیے ہم کیا کریں گے, ویل یوز دی سیم فارمولا, اور ہمارے پاس جو ہے کیلکولیشن جو ہے دیٹ از شون ان دس پرٹیکولر ٹیبل کہ یہ 2000 میں ایکچوئل ریٹرن از -0.20 اور کمپنی ایکس کے لیے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کمپنی ایکس کا مین کیا ہے 17.5 اور 0.175. ڈیویشن کیا ہوگی -0.20 minus 0.175 is equal to -0.375 اور اس کا ہم نے اسکوئر دیا تو دیٹ از 0.140625. 2001 میں ایکچوئل ریٹرن از 0.50 minus the average return just calculated 0.175 is equal to 0.325 اور اس کا اسکوئر از equal to 0.105625. 2002 میں ایکچوئل ریٹرن از 0.30 minus the average 0.175 is equal to 0.125 and the square of that is 0.015625. 2003 میں actual is 0.10 minus average 0.175 is equal to minus 0.075 and the square deviation is 0.005625. Sum of the square deviation is 0.267500. تو اس کے لیے جب ہم نے ویریئنس کیلکولیٹ کرنا ہے تو اسکوئر ڈیویشن کی سم کو ڈیوائڈ کرنا ہے بائی t-1. تو ہمارے پاس t is 4 -1 3 سے ہم ڈیوائڈ کریں گے تو we'll have the variance, اور وہ جو ویریئنس ہے
हमारी दैट इज इक्वल टू 0.0892 फॉर कंपनी एक्स, और उसकी कंपनी एक्स की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज 0.2987 और 29.87%. अब इसी तरह की कैलकुलेशन टेबल बना के इफ वी डू फॉर कंपनी वाई, तो हमने यहाँ पे ये शो किया है कि सम ऑफ द स्क्वायर डिविएशन क्या आएगा, दैट विल बी 0.0529 और उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो दैट विल बी 0.0176 और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 13.27. जब हम वॉलेटिलिटी को देखते हैं तो विच कंपनी इज मोर वॉलेटाइल, जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है. एक्स की कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 29.87 और वाई की 13.27. therefore X company is more volatile. What do we have here? We have a scenario जिसमें X का रिटर्न भी हायर था और उसका रिस्क भी हायर था, Y का रिटर्न भी लोअर था और उसका रिस्क भी लोअर था. तो ये तो था हमारा कैलकुलेशन फॉर द एक्चुअल रिटर्न्स एंड द एक्चुअल रिस्क. लेकिन जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वी डू नॉट हैव द एक्चुअल रिटर्न डेटा. हम जो है अपना डिसीजन बेस करते हैं कि फ्यूचर में हमें उससे कितनी अर्निंग्स होंगी, इसलिए इसमें जो रेलेवेंट हमारे रिटर्न्स होते हैं दे आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, और उसके साथ साथ हमें एक्सपेक्टेड रिस्क को भी कंसीडर करना पड़ता है बिफोर वी मेक अ फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की. अब एक्सपेक्टेड रिटर्न में एक हम सिंपल सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है U और दूसरी इन्वेस्टमेंट है L एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल टाइम पीरियड. और हमारी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है फॉर स्टॉक L दैट इज 25% एंड जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है फॉर स्टॉक U दैट इज 20% फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब सिचुएशन इज कि 25% फॉर L, 20% फॉर U फॉर द कमिंग ईयर, दैट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक U? कि हमारे पास जब एक हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है 25% फॉर L, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन L ओनली एंड व्हाई टू टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग इन U? Stock L having higher expected return may actually perform abnormally. It could go up to 70% in economic boom, or it may slide down to a negative return of 20% in recession. कि ओवरऑल तो हमने बात की है कि उसका L का रिटर्न 25% है, लेकिन उसकी रिटर्न में वेरिएशन एंड द पॉसिबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम इतना रिटर्न जो है वो अर्न कर सकेंगे. तो अगर हम दो इकोनॉमिक सिनेरियोज ले लें, एक है बूम का और दूसरा है रिसेशन का. बूम में तो हमारा स्टॉक L जो है हमें एक रेट ऑफ रिटर्न देगा दैट इज 70% और रिसेशन में दैट इज नेगेटिव 20%. When we look at stock U may earn 30% in recession and 10% during a boom. कि stock U जो है is performing better during the recession and is giving us a rate of return of 30%. और जब हम boom की बात करते हैं तो it is giving us 10% only. If the probabilities of occurring a boom and a recession are 0.5 each, then the expected return for both the stocks can be calculated as a formula is given. लेकिन इससे पहले जो है इसके behind rationale क्या है कि जब भी हमारे पास expected return 25% है तो we need to look at the possibilities के वाकई हमें वो return मिलेगा. तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या possibilities हैं. Probability क्या है कि एक higher return होगा, probability क्या है कि एक lower return होगा. तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हर एक रिटर्न को उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल L में जब हमने कहा स्टॉक में कि बूम के अंदर 70% रिटर्न है और अब हमने अज्यूम किया कि बूम की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 और साथ साथ रिसेशन में हमारे पास नेगेटिव रिटर्न है और रिसेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5. तो अब अगर हम इसकी कैलकुलेशंस को देखें फॉर बोथ द स्टॉक, तो कॉलम 1 में वी हैव टेकन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, रिसेशन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, बूम विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5. देयर इज वन थिंग व्हिच वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं
تو the sum of the probabilities for all possible outcomes they should always add up to 1. اس میں ہم نے کہا کہ there are only 2 possible scenario, boom اور recession, اس لیے 0.5 for the boom and 0.5 for the recession جو ہے it is adding up to 1. اب اسٹاک ایل کے لیے ہمارا ریٹرن ریسیشن میں ہے -0.2 اینڈ بوم میں ہے 0.7. تھرڈ کالم میں we have multiplied the probability with the return PXRL. So that is 0.5 multiplied by -0.2 is equal to -0.1. دوسری طرف ہمارے پاس بوم میں کیا ہے کہ we are talking about 0.5 multiplied by 0.7, PXRL is 0.35. The sum, which basically is the expected return, E of RL is equal to 0.25, which is 25% expected return. اسٹاک یو میں ہمارے پاس ریسیشن میں 30%, 0.30 ملٹیپلائڈ بائی اٹس پروبیبلٹی ریسیشن کی 0.5 از اکول ٹو 0.15. بوم میں یو کا ریٹرن از 0.10 اور اس کی پروبیبلٹی 0.5 از گیونگ اس اے ویلو 0.05 and the total is equal to 0.20 and that is the expected return for the stock U. اب یہ تو تھا ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹرن. اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رسک پریمیم. رسک پریمیم میں ہم کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسپیکٹڈ ریٹرن فرام این انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں ود رسک فری ریٹ. اور رسک فری ریٹ جو ہے از دا ریٹ آف انٹرسٹ آن اینی سیکورٹی جس پہ رسک 0 ہو. نارملی اس کے لیے ہم گورنمنٹ کا جو ٹی بلس ہیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں اس کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے از کنسیڈرڈ ایز اے پراکسی فار دی رسک فری ریٹ. سو دی ڈفرنس بٹوین دی ریٹرن آن اے رسکی انویسٹمنٹ اینڈ دیٹ آن اے رسک فری انویسٹمنٹ از نون ایز دی رسک پریمیم. سپوز رسک فری انویسٹمنٹس آر کرنٹلی آفرنگ 8%. In other words, risk free rate RF is 8%. Using this information, اگر ہم risk premium calculate کرنا چاہتے ہیں for stock L and stock U, then how do we go ahead and do it? تو ہم کیا کریں گے کہ ان کا expected return minus the risk free rate, یعنی E of RL minus RF. So risk premium for U will be equal to expected return minus the risk free rate is equal to E of RU minus RF is equal to 20% minus 8% equal to 12%, and risk premium for the L is equal to 25% minus 8% is 17%. اب جب ہم دیکھتے ہیں L اور U کو, L کا expected return is higher 25%, لیکن اس کے لیے risk premium بھی زیادہ چاہیے ہے. U کا expected return is lower 20%, اس لیے اس کے اوپر ہمیں رسک پریمیم بھی کم چاہیے ہے. اب انہی کو مزید ہم اینالائز کریں گے کہ سپوز وی گو ہیڈ ود ایل اینڈ یو اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ اے سینیریو جس میں ہمارے پاس ریسیشن اور بوم جو ہے اس کی پروبیبلٹی آف اکرنس جو ہے از ناٹ 0.5. 50% چانس نہیں ہے کہ بوم ہو اینڈ 50% چانس نہیں ہے کہ ریسیشن ہو, بلکہ ہماری پروبیبلٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. What are the probabilities? Here we have assumed کہ recession جو ہے اس کی probability جو ہے وہ 80% ہے اور boom کی probability 0.2 ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جب بھی ہم probabilities کی بات کرتے ہیں sum of the probability for all possible outcomes جو ہے it should always add up to 1. تب ہمارے پاس recession کی probability اگر 0.8 ہے تو بوم کی 0.2 ہے, ایڈنگ ٹوگیدر جو ہے that gives us a value of 1.0. اسٹاک ایل میں اب ہمارے پاس اگر ہم ایئر آف آر ایل کرنا چاہیں گے تو ریسیشن میں ریٹرن ہے -0.2 اور بوم میں ہے 0.7. اب ہمارا جو کیلکولیٹڈ ای آف آر ایل ہے دیٹ از اکول ٹو -0.02 کہ ریٹرن جو ہے وہ نیگیٹو ہو گیا فار دی اسٹاک ایل. واٹ از دی ریزن بہائنڈ؟ دی ریزن از کہ ہمارے پاس کیا سینیریو تھا کہ جو اسٹاک ایل تھا اس کی پرفارمنس بوم میں بہت اچھی تھی, 70% تھی, اور ریسیشن میں کم تھی. جب پروبیبلٹی آف اکرنس آف دی ریسیشن ہائی ہو گئی تو ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ریٹرن فار دی ایل جو ہے وہ نیگیٹو ہو گیا.
दूसरी तरफ जब हम यू को लेते हैं तो यू की परफॉर्मेंस रिसेशन में बेहतर थी, और जब रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई एज वी हैव कैलकुलेटेड हियर कि हमारे पास 30% था उसका रिटर्न ड्यूरिंग रिसेशन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8, तो हमारे पास क्या आया स्टॉक यू के ऊपर 0.24 फॉर द रिसेशन एंड बूम के लिए 0.10 into 0.2 gives us 0.02. ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ यू जो है दैट इज 0.26 और 26%. तो सिनेरियो क्या है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन हाई हुई और जो हमारी सिक्योरिटी वाज परफॉर्मिंग बेटर ड्यूरिंग द रिसेशन, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई हो गया, और जो हमारी सिक्योरिटी वाज परफॉर्मिंग वर्स, उसका जो है वो रिटर्न जो है वो कम होके नेगेटिव तक चला गया. सो दैट बेसिकली इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ रिसेशन एंड बूम. अगर हम वाइस वर्सा कर दें, बूम की प्रोबेबिलिटीज हाई हो जाए और रिसेशन की कम हो जाए, तो हमारी सिक्योरिटीज की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे. सो इफ द रिस्क फ्री रेट इज 10%, तो अब हम रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे. तो एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम फॉर यू जो है EFRU minus RF is 26% minus 10% is 16%. Our risk premium for L now will be minus 2% minus 10% is equal to minus 12%. तो ये तो बेसिकली था हमारा कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न में हमें जो है दो इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या क्या आउटकम्स जो है वो पॉसिबल हैं, उन आउटकम्स में हमारे इन्वेस्टमेंट्स के क्या रिटर्न होंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट क्या है. वंस वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब हमें उसकी वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न की भी जरूरत है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिस्क. एक्सपेक्टेड रिस्क को कैलकुलेट हम किस तरह करेंगे, द सेम फार्मूला, लेकिन अब हम उसको प्रोबेबिलिटीज के साथ एडजस्ट कर लेंगे. मेजर्स क्या है हमारी, वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन. दीज आर द टू मेजर्स ऑफ रिस्क. लेकिन हम उसको अब कैलकुलेट क्या करेंगे, कैसे करेंगे? टू कैलकुलेट द वेरिएंसेस ऑफ द रिटर्न्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन द स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन मल्टीप्लाई each possible square deviation by its probability and then add up all the products. Now if you try to recall, जब हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया था हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, प्रोबेबिलिटीज वर नॉट देयर. हमने सारी स्क्वायर डिविएशंस को एड अप करके उसको डिवाइड कर दिया था बाय t-1 के. लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर डिविएशन ले लेंगे फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके बाद स्क्वायर डिविएशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, और उस कॉलम को जब ऐड अप कर लेंगे तो डायरेक्टली दैट इज गोइंग टू गिव अस द वेरिएंस. तो वो कैलकुलेशंस हमने की हैं ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, कैलकुलेटेड द वेरिएंस. अब हमारे पास वही दो स्टेट ऑफ इकोनॉमीज हैं, एक स्टॉक एल के लिए भी और स्टॉक यू के लिए भी. रिसेशन प्रोबेबिलिटी इज 0.5, बूम प्रोबेबिलिटी इज 0.5, एडिंग टुगेदर टू मेक अ टोटल ऑफ 1. अब डिविएशन लेनी है, तो डिविएशन के लिए हम क्या करते हैं कि रिसेशन में स्टॉक एल का रिटर्न है नेगेटिव 0.20 और उसका एवरेज रिटर्न था 25% और 0.25 एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो माइनस 0.20 माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 0.45. अब इसका हम स्क्वायर लेंगे, माइनस 0.45 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2025. स्क्वायर लेने के बाद वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 विच इज फॉर रिसेशन. सो द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0.10125. फिर बूम में आते हैं हम, बूम में रिटर्न है 0.70 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न 0.25 गिव्स अस 0.45. 0.45 का हम स्क्वायर लेते हैं, 0.45 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2025. अब बूम की प्रोबेबिलिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 0.2025 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 0.10125. जब हम प्रोडक्ट के कॉलम को एड अप करेंगे तो दैट विल बी द वेरिएंस ऑफ स्टॉक एल. So sigma square L is equal to 0.2025 और 20.25%. अब हम आते हैं फॉर दी स्टॉक यू.
probabilities are the same for recession and boom. ریٹرن جو تھا ریسیشن میں از 30%, 0.30 مائنس ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا اسٹاک یو کا 0.20. 0.30 مائنس 0.20 از اکول ٹو 0.10. اب ہم اس کا اسکوائر لے رہے ہیں, سو وی ہیو 0.10 اسکوائر اکول ٹو 0.01 multiplied by the probability of recession 0.50 from column 1, 0.00500 is the product. Then boom میں 10% is the rate of return, expected return is 0.20, so 0.10 minus 0.20 is equal to minus 0.10, and then the square of the 0.10 is equal to 0.01 multiplied by 0.5 is equal to 0.00500. Adding up these two will give us the variance for u, sigma square u is equal to 0.0100. تو اب ہمارے پاس U اور L with the equal probability of recession and boom 50%, 50%, ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے ایکسپیکٹڈ ریٹرن بھی, اور ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہے ایکسپیکٹڈ رسک یا ویریئنس. ویریئنس کا اگر ہم اسکوائر روٹ لیں تو دیٹ ول بیکم دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو اس ٹیبل میں ہم نے سمرائز کیے ہیں وہ انفارمیشن. ایکسپیکٹڈ ریٹرن فار اسٹاک ایل از 25%, فار اسٹاک یو از 20%. Variance or the sigma square is 0.2025 for stock L and 0.0100 is for stock U. Standard deviation or sigma, that is square root of sigma square, 45% for stock L and 10% for stock U. Now the question arises, we do have a scenario that higher expected return has a higher expected risk and the lower expected return is attached with the lower expected risk. Which investment would you like to invest? کیونکہ اب ہم نے چوز کرنا ہے based on this information. اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور معیار ہے جس کو ہم کہتے ہیں coefficient of variation, جس میں ہم اپنے expected return کو adjust کرتے ہیں with the expected risk. So that we have calculated at the last row of this particular table. Coefficient of variation is equal to E of R divided by sigma. اس کو ہم نارملی کہتے ہیں coefficient of variation CV is equal to E of R divided by sigma. So for stock L, we take expected return 25% divided by 45% is equal to 0.55. For stock U, we take 20% divided by 10% is 2. تو hamaरे paas risk adjusted return jo hai, that is higher for stock U, which is 2, and is lower for stock L, which is 0.55. So we need to go for the stock with higher risk adjusted return, which is 2. تو یہ تو تھا کہ ہمارے ڈفرنٹ پروجیکٹ جس کے ایکسپیکٹڈ ریٹرن اور ایکسپیکٹڈ رسک ہیں, اینڈ ہاؤ وی گو ہیڈ میکنگ دی ڈیسیشنز بیسڈ آن دی رسک ایڈجسٹڈ ریٹرن. اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں, اور اس ایگزامپل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ فار دی اکانومی کنڈیشن ود unequal probabilities, and we have summarized the calculation in this particular table. پچھلے ٹیبل میں ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا ایکسپیکٹڈ ریٹرن اینڈ رسک when assuming کہ ہماری probability for the recession and boom is same 50%, 50%. اب اس ٹیبل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ probability of the occurrence of the recession is higher than the probability of the occurrence of the boom. 80% probability for the recession and 20% probability for the boom. تو ہم نے یہ ریکیلکولیٹ کی ہے. For stock L, probability of the recession is 0.8 and probability of boom is 0.2. اب ہم نے deviation کیلکولیٹ کی ہے, that is negative return ہے recession میں -0.2 minus اس کا ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹرن -0.20 minus 0.02. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے unequal probabilities کے ساتھ ریکیلکولیٹ کیا تھا ایکسپیکٹڈ ریٹرن, تو ہمارا اسٹاک ایل کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن واز -2% اور -0.02. تو وہ ہم نے یہاں پہ کیونکہ probabilities چینج کی ہیں تو ریکیلکولیشن میں وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف -0.02.
which is equal to minus 0.18. Boom में 0.20 is the probability and then 0.70 is the return minus the minus 0.02 return is equal to 0.72. Square deviation जो है हमारी that is 0.0324 for the recession and 0.5184 for the boom. अब इन स्क्वायर डिविएशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटीज के साथ तो 0.0324 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू 0.02592. बूम के लिए स्क्वायर डिविएशन हमारी है 0.5184 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 गिव्स अस 0.10368. इन दोनों को जब हम एड अप करते हैं प्रोडक्ट को तो हमारे पास है 0.12960 विच इज द वेरिएंस फॉर स्टॉक L, सिग्मा स्क्वायर L 0.1296. फॉर स्टॉक U, इफ यू ट्राई टू रिकॉल कि रिसेशन में हमारा स्टॉक U जो है वाज परफॉर्मिंग बेटर, इसलिए उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है दैट वी कैलकुलेटेड विद अनइक्वल प्रोबेबिलिटीज एज 0.26 और 26%. तो उसी एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम बेस बना के वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिविएशंस. रिसेशन में 0.30 माइनस 0.26 इज इक्वल टू 0.04 एंड बूम में 0.10 माइनस 0.26 इज इक्वल टू माइनस 0.16 और उसकी स्क्वायर डिविएशन ऑफ 0.04 इज इक्वल टू 0.0016 multiplied by the probability of 0.8 is equal to 0.00128. Boom में square deviation is 0.0256 multiplied by the probability of 0.2 is 0.00512 and the variance of U, sigma square U is equal to 0.0064. अब ये तो था हमारे पास वेरिएंस. अब अगर हमने इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करनी हो जो कि नॉर्मली हमारी स्टैंडर्ड मेजर है फॉर मेजरिंग द रिस्क, तो हम क्या करेंगे, विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ इट. सो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस 0.1296 स्क्वायर रूट गिव्स अस द स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा L फॉर स्टॉक L is equal to 36%. Standard deviation for stock U is much smaller and that is 0.0064 square root is equal to 8%. तो अब हमने ये देखा कि जब हमारे पास expected return मौजूद है, they are affected by the probabilities of the occurrence of different events. जब हमारे पास expected risk मौजूद है, that again is also affected by the probability of the occurrence. तो अगर एक स्टॉक जो कि परफॉर्म करता है बेटर इन रिसेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिसेशन बेहतर हो जाए तो दो चीजें होंगी, एक तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ उसका एक्सपेक्टेड रिस्क भी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू कि अगर एक स्टॉक जो है हमारा परफॉर्म करता है वर्स इन रिसेशन और रिसेशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बढ़ जाती है तो क्या होगा, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो भी कम हो जाएगा और एक्सपेक्टेड रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा. तो ये तो सारी डिस्कशन थी रिगार्डिंग द इंडिविजुअल स्टॉक जब आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है. नॉर्मली हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं एंड स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजर ने अगर कोई इन्वेस्ट करना है तो दी बिल्ड अ पोर्टफोलियो. अ पोर्टफोलियो क्या है बेसिकली? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स. अब वो इन्वेस्टमेंट्स जो है can be made in a variety of alternatives. हम कुछ अमाउंट जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ अमाउंट जो है हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ अमाउंट जो है हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में या व्हाटएवर. तो जितनी ये सारी कॉम्बिनेशंस हैं मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स के, उनको जब हम एक पर्टिकुलर हेड में लाते हैं हम कहते हैं ये हमारा पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है. फॉर्मली अगर हमने कहना हो तो वी से कि पोर्टफोलियो इज द ग्रुप ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर. अब जब हम कहते हैं वो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टॉक्स में की है और कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बॉन्ड्स में की है. अब इसमें कैलकुलेट करने के लिए विद इन स्टॉक्स भी हमारे पास वेरियस स्टॉक्स हैं,
ود ان بانڈس میں ہمارے پاس ویریس بانڈس ہیں. اس کو ہم کس طرح میئر کرتے ہیں, اس کو ہم کس طرح اکاؤنٹ فار کرتے ہیں, تو دین وی ہیو دی کانسپٹ آف دی پورٹ فولو ویٹس. تو پورٹ فولو ویٹس آر دی پرسنٹیج آف دی ٹوٹل پورٹ فولوز ویلو دیٹ آر انویسٹڈ ان ایچ پورٹ فولو ایسٹ. اب اس کے لیے مزید اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم چھوٹی سی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سپوز ہمارے پاس $200 ہیں, ان میں سے ہم نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے اسٹاکس میں اور کچھ ہم نے کرنی ہے بانڈس میں. جیسے if we have $50 in one asset and $150 in another asset, say $50 in bonds and $150 in stocks. The total worth of our portfolio is $200. The percentage of investments in bonds will be equal to 50 divided by 200 is equal to 0.25 or 25%. دوسری طرف اسٹاکس میں ہم کہہ رہے ہیں 150, تو 150 divided by 200 is 0.75 اور 75%. So we say ہمارے پورٹ فولو ویٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اسٹاکس میں ہمارے 75% اینڈ بانڈس میں ہمارے پاس 25%. Now let's return to our previous stocks L and U, where we pay half of our money in each. Portfolio weights are 0.5 and 0.5. یعنی ہماری وہی ایگزامپل ہے اسٹاک یو اور ایل کی. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یو میں بھی انویسٹ کریں اور ایل میں بھی انویسٹ کریں. 50% ہم نے انویسٹ کیا یو میں, 50% ہم نے انویسٹ کیا ایل میں. اب ہمارے پورٹ فولیو میں اگر صرف یہی دو ایسٹس ہیں ایل اور یو کے, تو ہم نے اگر پورٹ فولیو کا ریٹرن کیلکولیٹ کرنا ہو تو ہم کس طرح کریں گے. تو اسٹیٹ آف اکانومی, ریسیشن اینڈ دی بوم, اور ہم نے کہا کہ probability for the recession is 0.5 and the probability for the boom is 0.5, adding up to 1. Then we are calculating the portfolio returns if recession occurs and the portfolio return when the boom occurs. تو recession میں ہمارے پاس ہوگا 0.5 multiplied by minus 20%, کیونکہ ہم نے 50% جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے in stock having a negative return of 20%, plus 0.5 multiplied by 30% return of stock U in recession. So that is equal to 5%. اس 5% کو ہم اس کی probability of recession سے multiply کریں تو that is 0.5 is equal to 0.025. Boom میں 50% ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے پورٹ فولیو یو میں اور 50% ایل میں. ایل کا ریٹرن بوم میں ہوگا 70%. So we have 0.5 multiplied by 70% plus 10% ہوگا بوم میں ریٹرن فار اسٹاک یو کا, تو 0.5 multiplied by 10% is equal to 40%. اب 40% کو with the probability of boom multiply کریں تو that is 0.5 and that gives us 0.200. Expected return of the portfolio is equal to 0.225 or 22.5%. یہ تو تھا ہمارا ایک طریقہ کہ ہم کس طرح پورٹ فولیو کا جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں, کہ ہر اسٹیٹ کے اندر پہلے ایکسپیکٹڈ ریٹرن ملٹیپلائڈ بائی دی پروبیبلٹی آف دیٹ اسٹیٹ, اینڈ دین ان دونوں کو ایڈ اپ کریں. اگر ہمارے پاس دونوں ہی ہیں, الٹرنیٹیوز اونلی ریسیشن اینڈ بوم ہے, تو دیٹ از دی ایکسپیکٹڈ ریٹرن. الٹرنیٹیو ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ ہاؤ کین وی کیلکولیٹ دی ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف اے پورٹ فولیو از کہ سمپلی ہم ریٹرن آف ایچ انڈیویجل ایسٹ کو, ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف ایچ انڈیویجل ایسٹ کو ملٹیپلائی کر دیں اس کے ویٹس کے ساتھ. سو دیٹ وی ہیو ڈن ہیئر. Alternatively, portfolio expected return can be calculated as expected return of the portfolio is equal to, ہم 50% انویسٹ کر رہے ہیں ایل میں, تو 0.50 multiplied by the expected return of L جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا 25%, plus 0.5 multiplied by the expected return of U جو ہم نے 20% کیلکولیٹ کیا تھا. So we have 0.50 multiplied by 25% plus 0.50 into 20% is equal to 22.5%. چاہے ہم ایک اسٹیٹ کا علیحدہ سے کیلکولیٹ کر کے دونوں پورٹ فولیوز کا ایڈ اپ کر کے پروبیبلٹی سے ملٹیپلائی کریں, یا ہم انڈیویجولی پہلے
दोनों पोर्टफोलियोज के या दोनों स्टॉक्स के यू एंड एल के अलग-अलग जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले कैलकुलेट करें और सिंपली पोर्टफोलियो के अंदर जो वेट है उस पर्टिकुलर स्टॉक का उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न को मल्टीप्लाई करके एड अप कर लें तो वी आर एबल टू कैलकुलेट एंड गिव द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. अब इसके लिए हम मजीद डिस्कशन पे वी टेक द जनरल सिचुएशन. So suppose we had n assets in our portfolio, where n is any number, and let xi stand for the percentage of money invested in asset I. Then the expected return is a simple general formula. क्योंकि अभी हमने जो एग्जाम्पल ली थी वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन थी जिसमें हमने सिर्फ 2 एसेट्स को अज्यूम किया. अब अगर हमारे पोर्टफोलियो में एनी नंबर ऑफ n एसेट्स हैं, 50 हैं, 30 हैं, 20 हैं, 10 हैं, तो उसके लिए अगर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले हम ईच इंडिविजुअल एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको उसके एक्सपेक्टेड वेट से मल्टीप्लाई करके एड अप कर देंगे तो दैट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं expected return of the portfolio is the weighted average expected return of the individual asset. And formally अगर हमने उसको लिखना हो तो we'll say expected return of the portfolio E of RP is equal to X1 into E of R1. X1 is the weight for asset 1 and multiplied by the expected return of asset 1 plus weight of asset 2 multiplied by expected return. Or doing that, adding up to xn. Xn is basically the weight for the nth asset multiplied by its expected return. तो ये हमें देता है expected return of the portfolio. अब दूसरा है हमारा expected return के साथ साथ expected risk. Expected risk हम portfolio का किस तरह calculate करेंगे? By calculating the variance of the portfolio और द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो. अभी हमने ये कहा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो सिंपली वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द रिस्पेक्टिव एसेट्स हैं और उनको समेशन कर दें, अगर सम अप कर देंगे. लेकिन जब हम रिस्क की बात करते हैं, वेरिएंस की बात करते हैं तो इट्स नॉट सिंपली दैट इजी. सो वेरिएंस ऑन अ पोर्टफोलियो इज नॉट जनरली अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ द एसेट्स इन द पोर्टफोलियो. तो फिर इसको हम किस तरह करते हैं कि वी कंटिन्यू विद आवर प्रीवियस एग्जांपल. तो हमारे पास रिसेशन और बूम की प्रोबेबिलिटी है 0.5 and 0.5. पोर्टफोलियो रिटर्न इफ रिसेशन अकर्स इज 5% and the portfolio return if the boom occur is 40%. ये कैलकुलेशंस हमने पिछले टेबल में की थी और ये हम वहीं से वैल्यूज जो हैं उठा के यहाँ पे ला रहे हैं. स्क्वायर डिविएशन 0.05 माइनस 0.225 स्क्वायर, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो था 0.225 या 22.5%. सो 0.05 जो है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस पोर्टफोलियो का रिटर्न हमारे पास 0.2250 स्क्वायर उसका ले लें, दैट इज इक्वल टू 0.030625 and then we multiply it by the probability of recession which is 0.5 and that is equal to 0.0153125. Then we come to the recession. Recession में भी हमें अभी कैलकुलेट किया था कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का दैट विल बी 40%. तो इसलिए हम वी गो बैक टू रिसेशन एंड वी टेक 0.40 and then subtract the expected return of the portfolio 0.225. So 0.40 minus 0.225 square is equal to 0.030625 and then we multiply it with the probability of 0.5 and that is equal to 0.0153125 and we sum up these two values, product values, so that gives us the variance sigma square p is equal to 0.030625. अब अगर हमने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लेना हो तो इसी वेरिएंस का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 17.5%. तो ये तो था जब हम इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो ले रहे हैं जिसमें 50% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यू में और 50% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एल में. तो हमने कैलकुलेट किया कि हमारे
portfolio का expected return is 22.5% and risk is 17%. अब हम weights को change करते हैं और उसके लिए हम assume कर रहे हैं कि applying a different set of weights and that is 18% in stock L, 2/11 or 18% we should be investing in L and the remaining 9/11 or 82% we will be investing in stock U. अगर हम ये करें तो then if a recession occurs, portfolio's return will be 2/11 multiplied by -20%, which is for the L, plus 9/11 multiplied by 30%, which is for the U under recession. Overall during the recession is 20.91%. If a boom occurs, then the portfolio returns will be 2/11 multiplied by 70%, which is for L, and 9/11 multiplied by 10%, which is for U, and the overall for boom is 20.91%. The returns are the same, showing zero variance. अब हमने इससे क्या कहा कि अगर हमारे पास ये सिनेरियो हो जिसमें हमारे पास 18% and 82% की वेट्स है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो स्टॉक एल एंड स्टॉक यू, तो हमारे पास जो है वेरियस जो है वो 0 आ जाती है. अब इसका बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन इज कि हेंस कंबाइनिंग एसेट्स इनटू पोर्टफोलियोज कैन सब्सटेंशियली अल्टर द रिस्क फेस्ड बाय द इन्वेस्टर. कि अगर हम मुख्तलिफ सिक्योरिटीज को एक पोर्टफोलियो में डालते हैं तो ओवरऑल हमारे पास पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो कम हो जाता है. सपोज वी हैव द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस ऑन 3 स्टॉक्स. अभी तक तो हम जो चल रहे थे यू एंड एल 2 स्टॉक्स से चल रहे थे. अगर हम 3 स्टॉक्स ले लें ए बी एंड सी, तो हमारे पास बूम एंड बस्ट दोनों की प्रोबेबिलिटीज बूम की 0.4 है, बस्ट की 0.6 है. स्टॉक ए का रिटर्न है 10%, स्टॉक बी का रिटर्न है 15% एंड सी का रिटर्न है 20%. और बस्ट में है ए का 8%, बी का 4% एंड सी का 0%. What would be the expected return on this portfolio? With the given information, first scenario is with equal amounts invested in each of the assets, and the second scenario is with half investment in A and remainder divided between B and C. तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप खुद सॉल्व करेंगे एंड इंशाल्लाह हम जो इसका सोल्यूशन है वो अगले लेक्चर में आपको देंगे. तो डेटा सेट आपके पास मौजूद है जिसमें हमने ये कहा कि देयर आर 3 इन्वेस्टमेंट्स ए बी एंड सी. बूम और रिसेशन की प्रोबेबिलिटी भी हमने दे दी 0.6 एंड 0.4. और फिर हमने 2 सिनेरियोज रखे हैं. एक में ये है कि तीनों एसेट्स में हम इक्वल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. दूसरे सिनेरियो में हम कह रहे हैं कि हम ए में जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं 50% और जो बैलेंस है वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बी और सी में. यू आर सपोज टू कैलकुलेट दोनों सिनेरियो के अंदर एक में पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क, फिर दूसरे सिनेरियो में पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह we'll continue with the same example and we'll move forward and we'll talk about the security market line and the measurement of risk which is known as the beta coefficient. लेकिन इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर खत्म करूं, I would like to go through the topics which we have covered in today's lecture. तो आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर ही की कंटिन्यूटी में चले थे और हमने एक्चुअल रिटर्न्स के ऊपर बेस करते हुए पोर्टफोलियो का स्टॉक का जो है वो रिस्क कैलकुलेट किया. और स्टॉक का जब हमने रिस्क कैलकुलेट किया तो वी बेसिकली सेड कि सबसे पहले हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल, और उस एक्चुअल रिटर्न से वेरिएशंस लेंगे एंड दैट विल बी द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न और द रिस्कीनेस. फिर उसके बाद हमने कहा कि एक्चुअल रिटर्न के साथ हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न है और उस एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर बेस करके हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करते हैं.
हमने कहा कि हम ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं. उसमें हमें जो इनपुट्स चाहिए हैं वो ये है कि फ्यूचर में अगर आप एक पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक के क्या क्या रिटर्न है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर रिटर्न जो है वो आपको मिलेगा. बूम में कितना होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रिसेशन में कितना होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. उन सबको जब आप एड अप कर लेते हैं तो दैट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड रिटर्न. फिर एक स्टॉक के रिस्क को कैलकुलेट करने की हमने बात की एंड स्टॉक के रिस्क की कैलकुलेशन में हमने ये कहा कि रिस्क में आप उस एक्सपेक्टेड रिटर्न को बनाते हो सेंटर पॉइंट या फोकल पॉइंट और फिर देखते हैं कि रिटर्न जो है उससे कितना डिविएट करते हैं और उन डिविएशंस को हम स्क्वायर कर देते हैं एंड देन वी मल्टीप्लाई इट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अकरेंस और उनको जब हम एड अप कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है वेरिएंस. वेरिएंस का जो पॉजिटिव रूट है दैट बेसिकली इज द स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है नॉर्मली वो यूज होती है हमारी एज अ मेजर ऑफ रिस्क. इसके बाद हमने बात शुरू की पोर्टफोलियो की. पोर्टफोलियो में हमने ये कहा कि पोर्टफोलियो का भी हम रिस्क और रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टफोलियो है क्या? पोर्टफोलियो जो है combination of different investments which an investor undertakes. और नॉर्मली इन्वेस्टर जो है वो मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? इसलिए कि उसका रिस्क मिनिमाइज हो जाए या उसका रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के पहले रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ईच इंडिविजुअल सिक्योरिटी के अंदर उसका हम वेट कैलकुलेट करते हैं कि हमने ए में कितना इन्वेस्ट किया और टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी थी. तो हम जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न. हमने ये कहा कि हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू द वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो. लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिस्क की तो इट इज नॉट अ सिंपली वेटेड एवरेज और उसको हमने कैलकुलेट किया है. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए.